Hello, friends, and welcome back to Edureify YouTube channel. I hope you all are doing well. So, as you can see on my screen, edureify.com, our website already open. So, without wasting any time, we are here for all the JEE aspirants and solving mock tests for them. जिसने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट ऑन द बेल आइकन सो दैट फर्दर हम जितने भी मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप इजिली खुद भी edurify.com पर लॉग इन करके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सके. So we are going to select our exam JEE, then subject chemistry, and then go for the chapter. So today we are going to solve mock test for properties. And students, the chapters which we are attempting, they are very important for this time 2022 examinations. So these are the tests. So let's start with one test. Composition, properties and uses of polymer. So there are total 25 number of questions and you have to attempt these 25 questions within a time limit. So let's start. The first question is, the sterile gauze or cotton used in medicine is obtained by oxidizing cellulose with nitrogen dioxide, nitrogen, potassium chlorate, KMNO3. So it's nitrogen oxide. Ethylene propylene rubber is a syntiotic, unsaturated, saturated, stereoregular, acidic, unsaturated, unsaturated, stereoregular. So the correct answer should be C. Orlon is a polymer of vinyl chloride, tetrafluoroethylene, styrene, acrylonitrile. So the correct answer should be C. Which of the following has a higher glass transition temperature? Polyethylene, polystyrene, polypropylene, polyvinylchloride. So polystyrene. Fifth question, as the molecular weight increases, the tensile strength of polymers increases, uncertain, decreases, remains unchanged. So it's decreases. सो दोज हु वांट टू सी कि हम लोग करेंट जो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं उसका करेक्ट आंसर क्या है, सो दे कैन डायरेक्टली लॉग इन टू edurify.com विद देयर जीमेल आईडी और सिंपली बाय गूगल, और साथ में आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपना एग्जाम का स्कोर चेक कर सकते हैं. जिसने अभी तक हमारी ऐप डाउनलोड नहीं करी है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर एड्यूरीफाई द लर्निंग ऐप मिल जाएगी आपको, वहाँ पे डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए अपने मोबाइल फोन्स में एंड इसका यूज करिए. So seventh question is, in the process of forming mercerized cellulose, the swelling of cellulose is caused by C. Water. The monomeric units of pterylene are glucose, and which of the following? So B. Save and next. Which of the following is a synthetic polymer? Cellulose, protein, perspex, and rubber. Synthetic polymer. इस तरह से आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं और अपना स्कोर चेक कर सकते हैं. आई होप दिस वीडियो इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन कि आप किस तरह से लॉग इन करके अटेम्प्ट कर सकते हैं. सो डोंट वेस्ट टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए और अपना रिवीजन करिए. सो एड्यूरीफाई करो, पढ़ाई करो. थैंक यू.